Welcome back to dear students. We will do EVS of class 3rd, chapter 3, water o water. Okay, water o water. So in this chapter means it is given a poem on water. Okay, so in this poem we will see the uses of water that we use in our daily life, and water it is found in 3 states. Water it is found in 3 states on the land. Okay, so on the land water it finds in 3 states: solid, liquid and gaseous. So अर्थ पे वाटर कितने रूपों में मिलता है? थ्री फॉर्म्स. ओके, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस. So all these things we will study about. I will wash my face with water, said Munna to his Nani. So here Munna is saying to Nani, I will wash my face with water. Okay. Next, we all quench our thirst with water. We are all alive because of water. So here we use water in our daily life. So we drink water. Okay, water it is used for drinking purpose also. Okay, so because of this water only we are alive. Okay, water के द्वारा ही हम जीवित हैं. Water has been with us for ages. So water it remains with us from long days और long time. वाटर हमारे साथ बहुत दिनों तक है, मतलब बहुत दिनों से और आगे भी रहेगा. Its story can fill so many pages. So if we want to write a story on water, it can fill so many pages. Okay, we can fill so many pages. Somewhere it is dew, somewhere it is snow. Steam is also water, as you know. So here in this stanza we can see here discussed about states of water. Okay, water it can be found in 3 states: solid, liquid and gaseous. Okay, so here 3 states: dew, snow and steam. Okay, here steam means bhamp. Water has formed so many. That is what say my Nani. So Nani is saying that water has many forms. Water has many forms. Okay. The river flow, the waterfalls sing, and water swells in lakes and springs. So here in these places we can see the water. Where we can see water? हम water कहाँ देख सकते हैं? In river, waterfalls, then well, then lake, then spring. इन प्लेसेस पे हम क्या देख सकते हैं? वाटर. ओके. लाइफ ऑन अर्थ इट हैज़ ब्रॉट. सो हु ब्रॉट लाइफ ऑन द अर्थ? लाइफ कौन लेके आए हैं अर्थ पे? वाटर. वाटर फील्ड्स एंड लाइफ दे गॉट. सो वाइल वी वाटर द प्लांट्स they started growing. They started grow. Okay. So while we give water to plants, they start growing. जब हम पेड़ पौधों में पानी देते हैं, so they started growing. But when the water breaks in floods, great misfortune, it always works. So, but when the water has a large amount, means जब water ज़्यादा हो जाते हैं, then it forms floods. Okay, जब वाटर ज़्यादा हो जाता है, सो वाट इट फॉर्म्स फ्लूड्स. बाढ़ का रूप ले लेती है. ओके, सो दैट इज फ्लूड. इट इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर द ह्यूमन बीइंग. और बाढ़ क्या करते हैं? इट कैन yes, because of this flood we can lose our land, animals and our property. Okay, everywhere we can see water. Understood? Yes, so this is the poem on the water. And who has written this poem? इस poem को किसने लिखा? श्री प्रसाद. Okay students, now come to next page, page number 20.
Next one, there is given, do you know any poem or song on water? Recite it in the class. So if you know any poem or any song on water, you can recite, you can say in the class. When you will come in the class, you can say. Okay, next question, which are the places mentioned in the poem where we find water? So which are the places? Which are the places where we can see water in the poem? River, waterfalls, lakes and springs are the mentioned in this poem. Okay. Next one, tick the activities for which water is needed. तो यहाँ पर टिक करना है जिसके लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है. ओके. So here, to play, no. To write, no. To run a fan, no. Then to sing, no. To make tea, yes. Here you can tick. To paint pictures, yes. पिक्चर को पेंट करने के लिए उसमें पानी मिलाए जाते हैं. ओके. नेक्स्ट, टू रो अ बोट, यस. टू रो अ बोट, यस. ओके. नाव चलाने के लिए पानी की ज़रूरत पानी में ही चलता है नाव. टू डिग डग, टू नीड डग, यस. आटा गूंथने के लिए भी पानी का यूज़ होता है. टू ग्रो प्लांट, यस. ओके. सो हियर व्हाट विल कम? हियर ऑल थ्री, यस. नाउ कम टू नेक्स्ट. Name any 4 activities which you can do without water. So which are the activities for that you don't want water? Okay, so for walking, singing, playing, reading, writing, for that you don't want water. Okay, so here we can write walking, speaking, playing, reading, writing, anything you can write. Next one, you cannot. And next one, name any 4 activities which you cannot do without water. Means water we needed. कौन सी एक्टिविटी करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, मतलब बिना पानी के नहीं कर सकते. सो दैट इज बाथिंग, ड्रिंकिंग वाटर, देन ईटिंग फूड, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स. ऑल दिस थिंग्स विल कम. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next, there is given water more or less. Water more or less. Arrange the following on the basis of the amount water that is needed for each of the activities. Begin with the activity that needs the most water. So we can arrange this one in ascending descending order. Okay. सो सबसे पहले किसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, फिर किसके लिए, फिर किसके लिए. सो सबसे कम किसके लिए होती है, वी कैन राइट इन द लास्ट. ओके. सो फर्स्ट, टू वाटर द फील्ड्स. टू वाटर द फील्ड्स, फील्ड में पानी देने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है. ओके. सो हियर व्हाट विल कम? फर्स्ट नंबर टू वाटर द फील्ड. सेकेंड नंबर टू क्लीन द हाउसेज. Second number what will come? To clean the houses. Third number to bath. Here to bath. Okay. Next, fourth number what will come? To knead the dough. To knead the dough. आटा गूंथने के लिए. Then fifth number to drink. Okay. So we can drink only we can drink some water. Okay. For drinking we can use only a glass of water for drinking. Come to next page. Here, water from where? Water from where? From where we can get water, that is given there. In the poem you read about rivers, waterfall, lakes and springs. We get water from all these places. From where do you get water? Put a circle around those places that are either in your houses or around it. तो आपके आसपास पानी कहाँ से मिलता है? यू कैन सर्कल दैट. ओके. उसको सर्कल करना है. लेक, नो. रिवर, सॉरी, लेक, नो लेक. वेल, कुआं, येस, यू कैन सर्कल इट. ट्यूबवेल, येस, यू कैन सर्कल इट. पॉन्ड, नो. देन वाटरफॉल, it is no. Hand pump, yes, we can fetch water from the hand pump also. हैंड पम्प से भी पानी भरते हैं. रिवर,
If you have, then you can circle. Okay. Then stream, no. Tap, yes. Tap na, null. Then tank or tanka, yes. Tank is also there, you can circle it. C don't have. Then hot water spring, no. Come to next one. Have you seen hot water coming out of the ground? Where? Have you seen any places where hot water is coming out from there? If you see, then you can write yes. And place name also write. आपने कहाँ देखा है गर्म पानी निकलते हुए, उसको लिखना है. अगर देखा है तो यस लिखना है, नहीं देखा है तो नो लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. डज एनी रिवर फ्लो थ्रू योर विलेज और सिटी? इफ यस, राइट इट इज नेम. सो विच विलेज इज फ्लो थ्रू योर विलेज, which river is flow through your village or city? So in our area or in our city, in which river flow? Sindh river. Okay, you can write here Sindh. Next one. Do you know the names of any rivers? Write their name. So here you can write more names, more rivers name. So here you can write Ganga, Yamuna, Saraswati, Godavari, Neel also you can write here. Okay. Next one. Next, some of the question there is given, you have to solve it. Okay. At home, where do you get drinking water from? So in home, your home, from where do you get water for drinking? Tap na, everybody have tap. So here you can write tap. If you are getting water from the hand pump, you can write hand pump also. ओके. आपको पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? टेप से लाते हैं. नल से लाते हैं तो टेप लिखना है. हैंड पम्प से लाते हैं तो हैंड पम्प. ओके. डू यू हैव टू गो फार टू गेट वाटर? वाटर लेने के लिए आप बहुत दूर जाते हैं. हाउ मच टाइम डज इट टेक टू ब्रिंग द वाटर? कितना टाइम लेता है? सो नो, वी आर नॉट गोइंग एनी वेयर. ओके. दैट वाटर वी आर गेटिंग इन आवर हाउस ओनली. हमें पानी अपने घर में ही मिल जाता है नल से. ओके. Do your neighbors bring water from the same places? Yes, your neighbors are also bring water from the same places. आपके नेबर पड़ोसी भी सेम जगह से पानी लेके आते हैं. Why do you need to store water? We need to store water for our daily purpose, daily use. Okay. Who fetches and stores water in your houses? Okay, fetch means होता है लाना. Okay, who fetch water and who fetch and store water in your house? Generally mothers are fetching. Okay, mothers. Okay, mother is bringing water for the family. Next one. Are there certain people who are not allowed to take water from there? No. क्या आपके एरिया में या तो कोई ऐसे पीपल हैं जिसे पानी लेने जाने के लिए उस जगह से, किसी पर्टिकुलर जगह से पानी लेने जाने के लिए मना किया गया है? नो. ओके. इन आवर एरिया ऑल द पीपल आर फैचेस वाटर फ्रॉम सेम प्लेसेस. हमारे एरिया में सभी लोग एक ही जगह से पानी भरते हैं. अंडरस्टूड? यस. नेक्स्ट पेज. सो देयर इज गिवन सम पिक्चर्स इन पेज नंबर 22. सो कलर द pictures of those containers which you use for storing water. So आपके घर में in your houses which container is used to fill water, store water. Okay. So which container is using, you can color. उसको आपको color करना है. Okay. Come to next one. Then in your note copy draw picture of all this container that is used for storing water in your houses. Okay. So आपके घर में किस किस चीज़ें में, किस कंटेनर में पानी भरते हैं, आपको उसको डायग्राम बनाना है. ओके. राइट देयर नेम. यू कैन राइट देयर नेम आल्सो. टेक अ लुक एट द पिक्चर्स. इफ यू फिल दैम विथ वाटर विच विल कंटेन्स द लीस्ट वाटर. लीस्ट वाटर इन विच कंटेन्स? लीस्ट सबसे कम किस में आएगा? इसमें जग, टम्बलर. ओके. टम्बलर, दिस इज टम्बलर. नेक्स्ट, विच विल कंटेन द मोस्ट वाटर. मोस्ट वाटर सबसे ज़्यादा किस में आएगा? दिस बकेट. ओके. ओके. अंडरस्टूड? बिकॉज इट इज़ बिग, मोर वाटर कैन स्टोर हेयर in this bucket and less water can store in this tumbler. Okay. Here also.
Next, page number 23. So there is given in this grid, we can find the places where water can seen. Okay, so here how many places are there? 7. Find 7 of them. Given in the grid are some of the places where water is found. Find 7 of them and put circle around each. One has been done for you. Okay, so that is water आपको कहाँ कहाँ पर मिलता है? You can circle it. So there is given waterfall, then lake, then sea, then well, then pond, okay, then tap. These are the places. Here will come rain also. Okay, rain. And here in page number 24, there is given in every row put a circle around one that is different from the others. Also tell how it is different. So here we can write odd one out. Odd one out. So सभी लाइन में एक सबसे अलग है, उसको क्या करना है? We can circle it. Okay, we can circle it. क्यों अलग है? I will explain. Okay. So first number there is river, mountain, lake, pond, spring. So here all except this mountain, all these places we can see water. These are the sources of water. So here what will come? Mountain. Okay. Next one, bathing, washing clothes, swimming, combing hair, kneading dough. So except this combing hair, बाल को बनाने में या तो कंघी करने में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, एंड एक्सेप्ट ऑल दिस थिंग्स, except this everywhere we can see water, mean we use water. Next one, fish, duck, monkey, crocodile, tortoise. So except this monkey, all the animals they live where? In water. Okay, all these animals they are water animals. Monkey is land animal. Okay, so here what will come? Monkey. Car, boat, bus, train, bicycle. So here except this boat is water transport. Okay, and all the car, bus, train, bicycle they are land transport. Okay students, so I hope you full understand this chapter. You can by heart all this full exercise. आपको सभी exercise को याद भी करना है. Okay, thank you.